करते हैं. First question. Two particles A and B of mass m each are joined by a rigid massless rod of length L. अच्छा, a particle P of mass m moving with speed u normal to v. इसको ड्रॉ करो. A B दो पार्टिकल्स है, उनको एक L रॉड से ज्वाइन किया है. A particle P of mass m moving with a speed u normal to AB strikes A and sticks to it. So ये particle P है with u, इस पे stick करने वाला है. Fine. Center of mass of the A plus E plus R. So A plus E plus P system is C. The velocity of C before the impact and after impact both times same होने वाला है, ऐसा कुछ खास change तो नहीं हो रहा है. So it's u upon 3 of course क्योंकि सारे particles m mass के ही है. Velocity of so A is the answer. और क्या है velocity of A plus P immediately after impact, right? Okay, that's supposed to be what? Q upon 2. So think on it. तुम्हारे पास में टेंशन ऐसा सकता है, टेंशन ऐसा सकता है. So y डायरेक्शन में तो एटलीस्ट completely कंजर्व हो रहा है. So it's gonna be u upon 2 in this direction. और अभी क्या है, okay, अब ये u upon 2 हो चुका है. Let's just assume कि कोई तो भी impulsive force से ऐसा हो गया, right? Then same impulsive force यहाँ पे भी रहा होगा, but that would mean कि फिर dr upon dt zero नहीं होगा. You want to be zero, so this must just be zero. Yep, वो जो tension force है, impulsive tension, that must be zero. So there we go. Yes, it's just 2 upon 2. So C is correct. The velocity of B immediately after impact is 0, right? So D is also correct. Next question. Second, the potential energy U for a force field F is such that U is equal to negative K xy, where x is a constant. Okay, so you want the force, of course, right? So U अपने को दिया हुआ है. So it's like, okay, it's negative of U is just kxy. उसका partial with respect to x क्या होगा? That would just be k times y, और फिर with respect to y क्या होगा? K times x. There we go. So really, that's the thing. This is our force. So it's supposed to be ky I hat plus kx j hat. So A is the answer. और क्या है? The force F is a conservative force. इसका क्या कर्ल चेक कर लेते हैं, right? So कर्ल कैसे निकालते हैं? Curl is going to be like partial upon partial x and then partial upon partial y cross the force, of course. So yeah, that's going to be. Wait, अपने को पता है it's going to be conservative force because it can be represented using a potential, right? Yeah. So that means yes, it's a conservative force. So C is the answer. Still, just for surety बार कर दिए थे ना. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Y and x जैसा है, right? So k बाहर निकाल लो, उसको भूल जाओ, वैसे भी 0 होने वाला है, right? So that's 1 minus, this is going to be 1 0 and expected. So this is correct. AC is right. और क्या है? The force F is non-conservative. नहीं. Next question. A ball of mass m is attached to the lower end of a light vertical spring of force constant k. थर्ड करता हूँ. A ball of mass m is attached to the lower end of a light vertical string. Vertical string. उसका lower end पे क्या है? Ball of mass m. Okay. Spring. Okay, not a string. Force constant k. The upper end of the spring is fixed as expected. Okay. The ball is released from rest while the spring at its normal unstretched length. अच्छा, जब ये fine. And it comes to rest again after descending through a distance x, right? तो x क्या होने वाला है? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या रहेगी? एट दैट पॉइंट इज गॉट लाइक के एक्स इज इक्वल टू एम जी, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बोल दो, एम जी अपॉन के. इनिशियली एट एक्स इक्वल टू 0 है, सो 2 एम जी अपॉन के इसने ट्रैवल किया होगा. सो थर्ड का आंसर बी. और क्या है? द बॉल विल हैव नो एक्सेलरेशन एट द पोजीशन वेयर इट हैज डिसेंडेड थ्रू एक्स अपॉन 2, राइट? दैट्स राइट. वेट, ओके, नो एक्सेलरेशन, या राइट, क्योंकि उसका फोर्स बैलेंस हो जाएगा, राइट? सो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. और क्या है? The ball will have an upward acceleration equal to g at its lowermost point. Yeah, actually. So at uppermost point it's minus g, lowermost point it will be plus g. So yes, D is right. तुम करके देख लो ना. Yeah. Okay. Fourth. The potential energy of a particle of mass 0.1 kg moving along the axis is given by this thing. It can be concluded that potential दिया है, अपने को क्या निकालना है? What's the force? The particle is acted upon by a constant force. ठीक है, कर लेते क्या जा रहा है? So it's completely in. Oh, it's only x, huh? Moving along x. Okay, fine, right.
So 5x square minus what 20x. इसका अगर मैं negative d upon dx करूँ, then that's like 20 minus like 10x. So 20 minus 10x. That's the thing, of course. That's the force. So the particle is acted upon by a constant force? No. The speed of the particle is maximum at x equal to 2. X equal to 2 pe, right? This is going to be actually the minimum value at that point, right? So yes, that's right. The particle executes simple harmonic motion. Yes, that's very much correct. Because at position x equal to 2, इस पे acceleration 0 हो जाएगा because force ऐसा दिया हुआ, right? So उसके about थोड़ा बहुत तुम displace करो and then yeah, वो displacement proportional retarding force रहने वाला है, right? मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, क्यों दिखाऊँ मैं? तुम्हें पता है potential energy minimum है at x equal to 2, so of course B is correct, C is correct. Period of oscillation of the particle is pi upon 5 से करना ही पड़ेगा, ठीक है? So let's just say x is equal to 2 plus delta x, right? At that point force कितना हो जाएगा? It will just be negative 10 delta x. So that's the force. Our mass कितना है? 0.1 kg. That just means the acceleration is like this upon mass, which is negative 100 delta x. So this thing is just omega square. Omega is 10. So 2 pi upon 10. That's going to be pi upon 5 seconds. Right. That's why the period of oscillation is that. So D is correct, C is correct, right, and B is also correct. Speed of particle is maximum at x equal to 2. Okay, right, B, C, D. Next question. Fifth is the potential energy function of a particle moving in the one dimension is U is equal to this thing where A and K are constant. Then, ये गलत है भैया. X square और यहाँ पे E कौन की तो सही नहीं हुआ. फाइन. सो अपने को फोर्स निकालने पड़ेगा, राइट? सो इसको नेगेटिव का तो पड़ेगा नेगेटिव के एक्स स्क्वायर एंड देन ई पर, हाँ ठीक है, उसका अपने को डायरेक्टिव देना है. नथिंग अबाउट इट. तुम इसका डायरेक्टिव दोगे पहले नेगेटिव के एक्स, इसका भी लाइक नेगेटिव 2 के एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, और फिर क्या करोगे नेगेटिव के एक्स स्क्वायर और फिर इसका डायरेक्टिव. सो नेगेटिव के एक्स स्क्वायर एंड देन वंस अगेन ये सेम चीज. But now you also have this other term, so negative 2x upon a square, right? So e power negative x square upon a square common ले लो, what do you get? This और k भी common ले लो, this thing is just x cube upon, oh by the way 2 भी है, 2x cube upon a square and then minus of, तो तुमने k common ले लिया, it's just minus 2x, right? Yeah, so you can put 2k common लो, 2k और x भी in fact. So 2k e power negative x square upon a square, x बाहर निकाल लिया, x square upon a square minus 1, that's the thing. Okay, that's the force. So हमने करना क्या है? Typical the particle is acted up by constant force. Wait, okay, ये कुछ अलग क्वेश्चन है. फिफ्थ करना है ना अपने को, right? Equilibrium is at x equal to a upon 2. Actually में तीन जगह पे equilibrium है. It's at x equal to 0, x equal to a upon 2 and हाँ वो सारी चीजें. Okay, so right. Equilibrium and equilibrium is at a upon 2, so A is right. Okay, at x equal to 0 equilibrium is stable or what? 0 पे क्या u 0 हो जाएगा, otherwise u हमेशा positive रहेगा, so it's the minimum value basically, right? So yes, it's stable, so B is the thing. Unstable equilibrium positions क्या है? Of course जो बाकी दो positions थी यानी कि a upon 2 वाली. क्या k is पर? No, that's not the thing. x equal to a, ये a upon 2 क्यों लिया मैंने आखिर? It should be a, not a upon 2. ये गलत है. Yeah, okay, A is not correct, B is correct, and D is correct. Okay, next. Sixth करते हैं. Okay, in the following k equal to kinetic energy, U is potential, ठीक है. In using the expression k2 plus u2 is equal to, we recognize that. So okay, kinetic energy, okay, this potential energy plus work other, fine. We recognize that we are assuming no friction is present. नहीं, work other में friction भी include कर लेंगे ना अपन. What's the big deal, huh? Yeah, what's the big deal? I don't get it. Gravitational and elastic potential energies would be included in u1, u2. Yes. K and U can be either positive or, so B is correct, I guess. K and U can be either positive or negative depending on the reference point chosen. No, K can never be negative. It's kinetic energy. Yeah.
right? It can never be positive. So sorry, it can never be negative. So C, I think, is wrong. Work other can be positive, negative. Yes. So D is correct. Okay. Seventh, an object of mass 3m finally at wait. Okay. K change in kinetic energy तो नहीं है ना? नहीं, it's T kinetic energy. Fine. An object of mass 3m initially at rest on frictionless horizontal surface explodes, breaking into two fragments of so frictionless horizontal surface. Perfect. Mass m and 2m, which is the following statements after the explosion is true. Velocity of center of mass increases. No, it's zero. Yeah. Speed of smaller fragment will be twice that of larger fragment. Yeah, that's of course correct. So A is right, B is right. अपने को correct statements चाहिए ना? Yes. Fragments have equal magnitude of momentum in ground frame, but a different magnitude of momentum in center of mass frame. No. Magnitude of momentum in center. Wait, center of mass B तो in fact rest पर है, so वो भी ground frame ही हुआ ना? Yeah. Of course, yeah. So C is wrong. Okay, kinetic energy of the system increases. Yes, because rest say moving पे चला गया. So D is correct. And eighth question. Uniform rod of length L is falling down with velocity V naught when one of its end hits a fixed edge as shown. If the collision is elastic, the center of mass may have upwards velocity just after the collision. If the collision is partially elastic, the center of mass may come to rest just after the collision. Okay. If the collision is perfectly right. So A may have upwards velocity just after collision. Upwards velocity. What? No, the center of mass is like it's moving like this because yeah, ये जो system है, of course yeah, center of mass यहाँ पर है, it's moving like this because ये क्या? No, it cannot have upward velocity. That's wrong. यहाँ पे hinged है नहीं? कि hinged नहीं है, I guess. Oh, it's not hinged, huh? Oh, so it's falling down. Velocity v naught when one of its ends. It's a fixed edge. So यहाँ पे बस थोड़ा सा normal force लगा रहा है ये, and then friction. Okay, this is weird. Wait, something's wrong. Velocity v naught falling down बोल रहा है. Oh, अच्छा ये ऊपर से आ रहा था नीचे और फिर इसको तुमने hit किया यहाँ पे. अच्छा, fixed edge is shown. So it's gonna apply some kind of impulse and then ये उल्टा जाएगा. क्या ये स्मूथ है, फ्रिक्शन है यहाँ पे, हो क्या रहा है? नहीं कुछ भी, फाइन व्हाटएवर. तो ये ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगा. Center of mass may have upwards velocity just after the collision. If collision is elastic, then looks weird, doesn't it? Right. इस वजह से torque induced हुआ है, so that's something that we have to consider. और of course normal force यहाँ पे रहा ही है. Okay, this is bad. हाँ, अपने करना ही पड़ेगा. There's no other way. So भी normal force तुमने अप्लाई किया, so normal times the radius upon yeah right. इसको मैं just mr square बोल दूँ क्या? हाँ, क्योंकि ये like r is just l upon 2. Remember that, and then you're good to go. So mr squared. This is our alpha value, I guess. Right? That's the angular acceleration. No, that's not. That's the not the third. It's the omega value, right? Yeah. Okay. So this is actually the moment. The momentum. It's the angular momentum about center of mass. So nr upon mr squared. That's the omega. Omega square कर दो times inertia mr squared, and then yeah, half of that thing, half n square r square upon you cancel them like whatever 1 mr squared. That should be the thing. So half n square upon m. मुझे n नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए p है in fact. Yeah. राइट. ये नई अपन ने एनर्जी इसमें इंट्रोड्यूस कर दी और ये नीचे गया था वेलोसिटी v नॉट से. अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? इट्स गोना बी लाइक v नॉट माइनस p अपॉन m, राइट? सो हाफ m ऑफ दिस गाय, राइट? ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है इसकी. सो बी हाफ m एंड यू गॉट v नॉट स्क्वायर माइनस 2p v नॉट अपॉन m प्लस p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? जस्ट p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. परफेक्ट. Then you got minus p v naught upon m. Oh ये m तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? अच्छा यहाँ पे m स्क्वायर थोड़ी है, m और ये m कैंसिल हो गया, राइट? Yeah. Yes, that makes sense.
and then you got plus half mv naught squared. Yep, this thing is the, you know, what do we call it? Yeah, ये है अपनी you know, change in kinetic energies. That must be zero for elastic collision, which means that P is equal to mv naught, which means कि center of mass रुक जाएगा. Yeah. No, if the collision is elastic, perfectly okay. Ah, नहीं, वो just रुक जाना चाहिए और कुछ भी नहीं, right? मतलब कैलकुलेशन तो यही दिखा रहा है मुझे, और क्या है? कुछ गलत किया क्या मैंने? Oh, okay. Inertia is not mr, it's mr squared upon. Okay, that's where I went wrong. ये 3 आएगा ना ऊपर, like 3 upon p square upon m, right? और यहाँ पे जो अपना p square upon m मिला, half p square upon, so ये हो जाएगा 2 basically at this point. So 2 p square upon m, which means 2p is equal to, right? So p is equal to m v naught upon 2. इसका मतलब है कि फाइनली इसका राइट मोमेंटम क्या होगा? p v naught m v naught upon 2 in this direction, right? So it's actually still going down. Yeah, so D is the correct thing. और क्या है? ये तो एकदम लास्ट में देगा. और क्या है? Elastic, the center of mass may have upward velocity. No, if the collision is perfectly, sorry, partially elastic, center of mass may come to rest just after the collision. Yeah, I guess it can. Wait, no, I don't think. Wait a second. Right, okay, C में भी डाउनवर्ड वेलोसिटी है और इसमें भी डाउनवर्ड वेलोसिटी है, राइट? सो नो, आई डोंट थिंक बी इज राइट, क्योंकि उस रेंज में कहीं ना कहीं होना चाहिए. सो आई वुड प्रेफर कि यू नो उसके बीच में कुछ तो भी हो रहा है. सो दिस डजंट लुक गुड. या ओह, एंड दैट बाय द वे यहाँ पे भी mr स्क्वायर अपॉन 3 आएगा ना. हाँ ठीक है ना, वो 3 स्टिल मैनेज हो गया है ना. दैट्स ऑल यू हैव टू वरी अबाउट. कूल. तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट सी इज रॉन्ग. नो, ओके, सी तो राइट इनइलास्टिक है. बी क्या है? इज पार्शियली इलास्टिक, द सेंटर ऑफ मास मे कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. नो, दैट्स रॉन्ग. सो बी इज रॉन्ग. इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन का एरर तो नहीं किया इसमें. दैट्स 3p square upon m for sure, right? Yeah, of course, that's the energy. और कौन सी एनर्जीज मिली अपने को? ये चीज, देखो ये चीज दी थी, that times m is half mv naught square minus pv naught, yeah, and then you got half p upon by p square upon m, combined to get 2p square upon m. Yeah, so it should be mv naught upon 2, of course. Okay, I don't know, C correct नहीं लग रहा है मुझे. If the collision is partially elastic, the center of mass may come to rest just after the collision. May come to rest. No, I think वो ज़्यादा एनर्जी दे देगा इसको, इनफैक्ट, than what it had before. Inelastic collision में क्या होगा? Center of mass may have a downward velocity just after collision. Yes, because जो kinetic energy है, that is like, yeah, it's completely lost, right? That should be the thing. So in that case, this whole thing must be zero. So for that to happen, क्या होना चाहिए? You know, right? ये जगह 2 times of p upon m का square, which is basically like v square, जो नई velocity इसको दी थी, so like v square. v final velocity नहीं है, ये change in velocity है by the way. So 2v square minus, you know, just v naught v plus half m v naught. Yes, that's right. ये m गया ना यार, ये m थोड़ी ना यहाँ पे. Half v naught square is equal to 0, which means that 4v square minus 2v naught v plus v naught square is equal to 0. Shit, not nice. इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है यार. ये कभी हो ही नहीं सकता that it will have perfectly inelastic collision. Okay, just move on. Next question. I mean, of course, तुम जब इसमें टॉर्क क्रिएट करोगे, तुम कोई भी टाइप का इंटरेक्शन करते हो, इन एनी काइंड ऑफ केस, ये इट विल ऑलवेज हैव दिस रोटेशनल एनर्जी. सो ये इनइलास्टिक कभी हो ही नहीं सकता. दैट्स अ थिंग. ओके, सो इसका सिर्फ डी आंसर करेक्ट है. 9th देखते हैं. A particle A suffers an oblique
elastic collision with a particle B that is at rest initially. If their masses are the same, then after the collision, okay, masses are the same and elastic collision, huh? Right, with something that's at rest. Okay, तो ये ऐसा है, right? इसका कोई तो भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का ऐसा, एंड देन ऐसा एक कंपोनेंट है, वी नो दैट दिस कंपोनेंट इज जस्ट ट्रांसफर्ड टू दिस गाय, और ये ऐसा ही रहने वाला है. सो these are perpendicular, yeah, these are moving perpendicular to each other, right? B moves along the line of impact. Yeah, so this is A, this thing is B, it moves along the line of impact, so A is correct. और क्या है? Velocities of A and B will interchange along line of impact. along line of impact will interchange. हाँ ऐसा बोल सकते हैं, बट तुम इसका क्या करोगे? इसको तुम इंक्लूड नहीं करोगे? I guess maybe you can say B. Okay, they will move in mutually perpendicular directions. Yes, so C is correct. And they will move in symmetric direction with respect to the initial line of motion of A. No, symmetric नहीं बोल सकता मैं किसी बात से. So next, 10th. The potential energy in joules of particle of mass 1 kg moving in a plane is given by this thing, the position coordinates of the point being x, y measured in meters. If the particle is initially at 6,4, then potential energy दी है, coordinates initial दिए. Is acceleration of magnitude something, okay. अच्छा ठीक है ना, वो सब ढूंढना अपने को. स्पीड क्या है when it crosses the y axis is this thing 3x plus 4y. Okay, when it crosses the y axis, I guess it does depend on that. Okay, तो इसका force क्या रहने वाला है? The force is just negative, and then you got it's gonna be 3 and partial on y. Okay, that's supposed to be 4, so it's a constant, huh? That's awesome. Force is a constant. Okay, so right, acceleration का magnitude कितना होगा? It's 5 is the magnitude of the force, and ये 1 kg, so it's also 5. So A is correct. Its speed when it crosses the y-axis. So अभी कहाँ पर है ये? 6,4. Force same है यार, हर बार -3,4 is the acceleration all the time. So whenever it's gonna cross the y coordinate, इसका initially y coordinate 4 है, so you want 4 minus half at square. Yeah, 4 plus. You get the thing, right? Of course. So or initially 0 velocity, right? There we go. So minus 4 upon 12 minus 2t square, of course. That's going to be equal to 0. So t is equal to square root 2f. Yeah, okay, whatever. Ah, that's not nice. That's 4 right there. Initially ये 4 है, इसको -4 पे जाना रहेगा, right? Yeah. That's what do you think? Of course. Y-axis. Oh shit, y-axis is when x is equal to 0. मैं क्या कर रहा हूँ आखिर? It's gotta be like 6 minus 3 upon 2t square, that's equal to 0. That will happen whenever you have t is equal to 2. So t equal to 2 पे होने वाला है ऐसा. तब इसकी स्पीड क्या होगी? So initially 0 है, तब क्या होगी? It's gonna be -6,8, right? Negative of 6,8 बोल सकता हूँ मैं. Then the speed is 10, of course. The p is also correct. It crosses the y-axis at, okay, x is equal to 0 at y is equal to -4, right? So y coordinate क्या हो जाएगा? 4 minus half t square is like 2 times of t half a t square. So t to 4 है, just gonna be 2 times of 4, which is just -4. So x y equal to -4, right? इसका आंसर C करेक्ट है. और क्या? इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. I mean no, अब ने अभी भी दिखाया है जब y एक्सिस क्रॉस करेगा तब ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, सो ही इज रॉन्ग. अपने को क्या चाहिए था? करेक्ट सीक्वेंस, ऑफ कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. 11th is a box of mass m is released from rest at position 1 on the frictionless curved track. Okay. It slides a distance of d along the track in time t to reach position 2. Okay, dropping by a vertical distance h. ठीक है. Let v and a be the instantaneous speed and instantaneous acceleration respectively of the block at position 2. अच्छा, so ऐसे गया. ठीक है, स्पीड अपन ढूंढ सकते हैं, no big deal. Right, which of the following equations valid for this situation? और acceleration, right, normal cancel हो जाएगा, it's gonna be in this direction, of course. That's the thing, right? I guess so.
आर वी श्योर कि ऐसे ही होना चाहिए? आई मीन या एक्चुअली नो, वेट नहीं, कुछ तो गलत लग रहा है इसमें. हाउ डू यू नो फॉर श्योर दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस? ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट सपोज यहाँ पे कर्वेचर था, तो अब क्या? हाँ, अगर यहाँ पे कर्वेचर है देन या दैट्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज फिर अपन एक्सीलरेशन नहीं निकाल पाएंगे इन एनी केस. शिट, राइट. आई मीन व्हाट इफ देयर इज अ कर्वेचर, तो फिर अपने को नेट एक्सीलरेशन अलग मिलेगा देन व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट. अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन हो ही ना, इट इज कंप्लीट इन दैट डायरेक्शन. बट इफ देयर इज अ कर्वेचर, ओह शिट. कुछ दिया है क्या अपने को ट्रैक की ज्योमेट्री के बारे में? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया. Along the track in, हाँ, so speed and acceleration is vector of the box get position to. So सारे एक्सेलेरेशन वाले इक्वेशंस गलत है. इनफैक्ट आई कैन जस्ट से दैट h, okay, whatever. So half gt square, well, whatever, d is equal to half. Oh, and by the way इसमें टाइम का इम्पोर्टेंस है. That's even weird. और d क्या है? d is स्लाइड रेजिस्टेंस d, एटलीस्ट वो तो भी अपने को पता है, राइट? ओके, gh is equal to half mv. Okay, so d I think is so d is correct. ये इक्वेशन करेक्ट है. h is equal to v times t. ये जो स्पीड रहने वाली है, हाउ सो दिस डिस्टेंस, हाउ डू यू फिगर दैट आउट? अपने को हर जगह पे स्पीड पता चल जाएगी ना. या एक्चुअली so we want to integrate with respect to time of course, but that's problematic actually. Yeah, I mean अपन नहीं कर सकते, that's the problem. अपन बस कर ही नहीं सकते. Yeah, right. Time it's not like a free fall. यार यहाँ पे upward forces लगने वाले हैं, and then अगर तुमने ऐसा भी कर दिया then just time changes and the yeah it doesn't change like that. Okay, problematic, really problematic, you know. So ये equation I guess is wrong. This equation is also incorrect. Only D is the correct equation. अपन सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते. 12th, in an elastic collision, the velocity of both the particles may be same after the collision. Yes, A is right. Kinetic energy is not conserved. Yeah, that's right. Shit. वो जो था या ये चीज, इसमें जो perfectly inelastic collision था उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? आई गेस तुम बोल रहे हो कि ये यहाँ पे चिपक गया, राइट? ये चीज यहाँ पे चिपक चुकी है आई थिंक, या फिर बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो, आई डोंट नो. मिनिमम कब रहेगी काइनेटिक एनर्जी? वेल आई हैव नो आइडिया. ये थोड़ा सा इसको मूव कर दो, आई डोंट नो यार, ये अजीब हो रहा है. So maybe जब ये चिपक जाएगा, that's what we call as inelastic or something. Yeah. So in that case, center of mass has a downward velocity just for the collision. Yeah, तो यहाँ पे चिपक गया ना basically. So right, इसको ऐसा एक टॉर्क मिल चुका है. That means like it's now going with some kind of angular velocity, of course. Right. Yeah, sure. मतलब इसके ऊपर भी देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो आई गेस मे बी सी वाज राइट. सो 8 का सी शायद से करेक्ट था. आई डोंट नो. तुम इसमें इलास्टिक को डिफाइन कैसे कर रहे हो? दैट डिपेंड्स. ओके, 12th, इन एन इलास्टिक कोलिजन velocity of both the particles may be same after collision. Yes. Kinetic energy is not conserved. B is also correct. Linear momentum of the system is conserved. Yes, that's right. Velocity of the separation will be less than the velocity of approach. No idea. No idea. I mean, yeah, right. I guess mostly yeah, but I don't know, yeah. Velocity of separation will be like 0 if it actually
sticks to each other. शायद से अपन बोल सकते हैं it's less than that. Think about it. Velocity of separation. So initially suppose इसकी velocities u1 और u2 थी. Finally velocities क्या हो गई? इसका हो गया u2 plus p upon m2. इसका हो गया u1 plus p upon m1. Actually minus whatever. So velocity of approach is just u2 minus u1. Velocity of separation क्या है? u2 minus u1. Wait, separation it should be like increasing. यहाँ पे decrease हो रहा था, right? Okay, it should be u1 minus u2 here actually. और यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 minus u1 and then you got plus p upon m2 plus p upon m1. So you are saying that this velocity is actually more than that or something like that. No idea. No idea ऐसा क्यों होना चाहिए. Whatever, just move on. So 12th कैसे छोड़ देते हैं 13th. Okay, two blocks A, B attached to the ends of a spring constant something are placed on a smooth horizontal plane with the spring undeformed. Spring undeformed है, दो blocks तो ऐसे रखा हुआ है. Simultaneously velocities of 3 meter per second and 10 meter per second along the lines of the spring the same direction are imparted onto B and A. अच्छा, okay, cool. Spring constant दिया है इसका. Right, okay, उतना ही है. When the extension of the spring is maximum, the velocities of A and B are 0. What? ये 3 meter नहीं, no. Extension is the maximum. No, not. It's not 0. Center of mass to move कर रहा है. Okay, the maximum extension in the spring is लगा ही था. Initially क्या कहना चाहिए इसकी? Okay, so let's just do this thing. mu square plus capital M v square half है but मैं उसको ignore कर रहा हूँ. That's equal to kx square plus m times जो total momentum रहने वाला है. So total velocity बोल दो जो भी total momentum ही यूज करते हैं ना. So small m u capital M v का square upon 2m है पर 2 कटने वाला है. So like just ये चीज. So kx square is equal to ये सारी गलती सी चीज, राइट? करते कैलकुलेट इसको, क्या जा रहा है? So a is of 5, u कितना है? 3 का स्क्वायर इज जस्ट 9 प्लस कैपिटल M कितना है? 2 and that's 10, so 2 times of 100 minus ये चीज. So it's 5 times of 3 15 plus 2 times of 10 20 का square upon m plus n which is 7, right? This is going to be equal to 5 times 9, so like 45 कर डालते हैं इसको. So 245 minus this is 35 का square, so 35 times 5 हो गया ना basically, right? Which is 15 and 25 just 175. That's equal to 47 क्या होता है? 7, yeah, that's the thing, 70. That's kx square. X square is just equal to 70 upon k. And what is k? 1120. Isn't 112 something like, yeah, it's 17 times 7, so 749. Yeah, of course it's 17 times 7. So ये हो जाएगा just 1 upon 17. So it's 1 upon square root of 17. That should be the thing. Of course. So it's not 25 centimeters. It's like 1 upon square root of 17. Where is that? There should be that thing, right? Yeah. उसका क्या? हाँ? 1 2 is of course. No, it's not 7 times. Shit. क्या हो गया इसमें? 7 upon. Okay, let's do this properly. 1 upon. So it's like 1 and then 42 is. Oh, it's 1 upon 6. X is equal to 1 upon 4. मैं क्या कर रहा था? Upon 16. Okay, that's the thing. So, right. That's 1 upon 4 meters. 25 centimeters. So B is actually correct. और ऑफ कोर्स मैक्सिमम कंप्रेशन भी उतना ही रहेगा. ओके, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द एंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑकर अल्टरनेटिवली. या ओके, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑकर फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर pi upon 56 seconds. Oh god, I don't want to be doing this. इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से देखना पड़ेगा मुझे. It's awful. Seriously, हाँ?
I don't like this. At this point, okay, तो ये है 5 and then ये जो 2 है, it's like this. Okay, it's like this actually. With respect to ये एक्चुअली मैं ऐसे 7 से मूव कर रहा था, राइट? एट एनी गिवन मोमेंट जब इसका एक्सटेंशन x होने वाला है, तो व्हाट्स द एक्सेलरेशन ऑफ 2 s in by 5? तो इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली कैसा होने वाला है? इट्स गोना बी लाइक kx अपॉन द मास व्हिच इज 2, और इसका एक्सेलरेशन है kx अपॉन 5, बट इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, राइट? सो विद रिस्पेक्ट टू दिस गाय इट्स एक्चुअली लाइक kx टाइम्स 7.5, 7kx upon 10, sorry. Yeah, that in this direction. So basically negative of that thing. That's equal to d square x upon dt square, right? तो फिर अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, right? So x is just equal to, yeah, right, okay, it's supposed to be some kind of amplitude sine of omega. For omega, you just want this thing, square root of 7k upon 10, right? And then this times t plus some initial angle, whatever. Initially क्या है? Initially तो x 0 है, so okay, और ये ऐसे जा रहा है, so I guess it's phi equal to 0. Make sense? It should. Okay, so the maximum extension and maximum compression occur alternately. Maximum compression occurs for the first time after pi upon 6. So ये ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा और फिर ऐसे जाएगा, right? So अगर मैं इसको ओके, 0 इज द फेज, देन यहाँ पे फेज पाई अपॉन 2 है, फिर यहाँ पे पाई आ गया, फिर यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 आ गया, दैट्स द फेज, राइट? दिस मस्ट बिकम 3 पाई अपॉन 2, सो t should be equal to 3 pi upon 2 and then you got square root of 10 upon 7k. Oh god, 3 pi upon 2 square root of, क्या है ये? k की वैल्यू क्या थी? It was 1120, so क्या है ये? 1 upon 7 times 112, which is 16 times 7 square basically, right? So equal to 3 pi upon, ये कुछ से कुछ हो रहा है यार, pi upon 56, I don't know, q, just q, क्या है ये? Nope, not making sense. So नहीं, ये गलत है. That's all I can say. Next question. 14th. Choose the correct alternative. The figure shows a block of mass m moving without friction along 3 tracks with same speed v. Sorry. क्या हो रहा है? Figure shows a block of mass m moving without friction along 3 tracks with same speed v. Okay, ऐसा fine. Normal is equal to mg and 1. Yeah, that's right. So A is correct. And 2 में क्या हो रहा है? It's mg minus mv squared upon r. I mean, yeah, it does have an acceleration like that. So, basically mg minus n2, right? That's providing acceleration. That's equal to mv squared upon r. Yeah, so n2 is equal to mg minus mv squared upon r. That's right. So that's b. और क्या है? r को नेगेटिव कर दो, although वो अजीब लगेगा, but whatever. C is the thing, क्योंकि अब इसको वाला एक्सिस में प्रोवाइड करना है. So C is the thing. If figure, what? The block will leave path v is bigger than क्या है ये चीज? If figure comma, क्या समझूं मैं इसका? जो भी है. Next question. Okay, 15th. In case of a simple pendulum of length L, the tension at the lowest point for just completing the circular motion is 6 mg. So for just complete the, oh yeah, that thing, of course. So right at that point you just got v square upon r equal to g, so v square equal to rg, but rg plus, और फिर ये क्या हो जाएगा? 2 times 2r and then times g, so like plus 4rg. That's equal to v square, right? Yeah, by kinetic energy conservation. So v is equal to square root of 5gl. So pendulum will loop if v is bigger than or equal to square root of 5gl. Yes, C is correct at least. Tension at lowest point for just completing the circular motion. So v square upon r will just be 5gl. So 5g, sorry.
और ऑलरेडी g तो है ही, so tension is 6g, that tension upon mass, that's 6g. So yes, A is also correct. The velocity v at the lowest point for just completing circular motion is, ये और C में फर्क क्या है एग्जैक्टली? आई डोंट गेट इट, इसमें फर्क है क्या एग्जैक्टली? सेम ही तो बोल रही है, पेंडुलम की लूप। वेल वॉट एवर, बी इज ऑल्सो करेक्ट. The motion of bob of pendulum is of variable acceleration. What? Yeah, I mean, of course, vector to change velocity acceleration का है. Yeah, right. So D is also correct. Right. I mean, V square change हो रहा है. Of course. Next question. 16th. A particle moves in the xy plane according to the law x is equal to ये चीज, y equal to that thing, where A and W are omega are constants and the particle traces. So A sin of omega t, y is equal to this thing. अच्छा यहाँ पे क्या है ये? Oh ये तो easy है. It's just like what? X equal to 0 पे centered है and this is centered at x is equal to 1. Sorry, x equal to y equal to a. So over here initially जब t 0 है just equal to 0 comma 0, right? So it's moving like this and वहाँ पे negative है. हाँ, oh interesting. Okay, क्या हो रहा है? X increase हो रहा है, right? We know it's supposed to be on a circle and yeah, right. Okay, y is that? You can say negative y is negative a plus cosine of omega t. So अगर मैं इसको real x मानूँ, इसको imaginary x मानूँ, yeah, in that case that might make sense actually, right? And then that's this thing. So this angle is actually, that's the negative y-axis. T equal to 0 पे ऐसा होना चाहिए, right? हाँ, that's interesting. हाँ नहीं, वो एक cosine, wait a second. Y is equal to, it's going like that, of course. It's going down, right? Yeah. स्टार्टिंग वो नीचे है. सो ये जो वेक्टर है ये नेगेटिव है. अगर उसका मैं पॉजिटिव वैल्यू देखो, इट्स लाइक या सो कोसाइन ओमेगा टी कॉमा साइन ओमेगा टी होता अगर लेट्स जस्ट से इट वाज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओमेगा टी होता. बट द थिंग इज एक्चुअली ये ऐसा है, राइट? दिस इज ओमेगा टी, दिस एंगल इज व्हाट दे कॉल एज ओमेगा टी. ये नहीं है, राइट? दैट्स द थिंग. इन द पार्टिकल ट्रेसेस, आई मीन तुम्हें दिख रहा है ना, तुम्हें दिख ही रहा है. द एक्स कोऑर्डिनेट इज साइन ओमेगा टी से रिलेटेड और ये कोसाइन से, ऑफ कोर्स. It traces a circle. So see, ये था ही क्या exactly? Distance proportional to time. I don't know तुम क्या बोल रहे हो. Next question. 17. ये तो मैथ्स था थोड़ा बहुत. 17 था. A fly crawls with constant speed v across the radial spoke of a wheel which is rotating with constant angular speed omega. Initially, the fly starts from center of the wheel along the axis, along the radial spoke of a wheel, and crawls with a constant velocity v. Sure. Initially, the fly starts from the center of the wheel along the x-axis. Then, okay, so it's like the actual velocity of the fly in fixed frame. So xy frame, okay. That is v is equal to v e r. That is this thing, okay. Okay, plus r omega. Yeah, I mean, of course, it's just that, right? That's correct, in fact. So yes, okay, so A is correct, I guess. ऐसा लग रहा है कि इसने अभी मतलब चुरा के लोगों ने छाप दिया है बस. Actual velocity of fly in fixed frame is v vector equal to v omega e r. No, क्या क्या क्वेश्चन उसी को चाहिए. Okay, the position of fly at any instant is r is equal to v theta upon omega e r. अच्छा, v theta upon omega, और theta क्या है exactly? अच्छा, theta upon omega. Oh, that's like v times time, of course. That's the thing. So yes, it's actually correct. So C is right, in fact. V t upon no. So C is the correct thing.
Okay, 19th. नहीं, 18th. A ball of mass m is placed in a smooth groove in the disk at the center of the groove as shown, and the frame starts to rotate with angular speed omega. ये डिस्क है ये, ठीक है. So the following is correct. Net force on ball is towards center. So okay, ये जो पूरी frame, right. Net force on the ball is towards the center, towards the, and it's along this groove and huh. Okay, what's center? No, it's in. Okay, then rotating frame में होगा, right. और इस frame में particularly क्या हो रहा है? It's like this ऐसा, yeah. Net force on this ball, huh? Hey, so in the rotating frame, it's omega square r in this direction. That's how the acceleration is, right? और इस frame में क्या हो रहा है? ये जो right in that particular frame exactly हो क्या रहा है? So you can see, okay, r double dot for this guy, right? That's equal to omega square r. Oh yeah, the thing is इसमें actually radial force है ही नहीं कोई, सिर्फ tangential force ही है. So r double dot is equal to omega square. मतलब कि yeah, radial force 0 है, tangential force is there, it's a normal force. In this particular frame exactly हो क्या रहा है? There's a tangential force, so the normal force, right, exerted by this frame, that is equal to the Coriolis force, which is is 2 omega r dot times mass, right? Yeah, and r dot can be figured out. That is this velocity, of course, right? So that's how the normal force. Yeah, okay. So the net force on the ball is towards center. That's just wrong. Motion of the ball is in radially outward direction with respect to the center. I mean, okay. ऐसा नहीं है क्योंकि अगर अपन इस फ्रेम में बात करें then it's like कौन सी फ्रेम में तुम बात कर रहे हो? सेंटर के लिए दो फ्रेम्स हैं. It can be this xy frame or it can be the r hat t hat frame. I don't know, yaar. Centripetal force is mr omega square. Centripetal force is this thing. Actually में इसमें कोई centripetal force है ही नहीं, right? Motion of ball is circular. No, in this frame it's not circular. Ah. God, ये तो कुछ ही कुछ है. क्या करूं अब मैं? इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट और सेंसिबल नहीं लग रहा है मुझे. बी थोड़ा थोड़ा ओके है क्योंकि अगर अपन इस तरह की बात करें आर है टी है देन इट्स एक्चुअली गोइंग आउट. सो बी शायद से करेक्ट है बट अदर देन दैट ये कुछ ही कुछ है यार. सेंटिपिटल फोर्स की तुम बात कर रहे हो जबकि यहाँ पे एक्चुअली कोई एक्चुअल फोर्स लग नहीं रहा है, राइट? या ओके, वॉट एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th. Okay. A perfect and imperfectly elastic ball is projected with velocity square root of g at an angle alpha with the horizontal. Okay, elastic ball is projected with velocity square root of gh at an angle alpha to the horizontal so that it strikes a vertical wall distance c and returns to the point of projection. Then अच्छा तो ऐसा हुआ ना, वापस आ गया. इम्परफेक्ट इलास्टिक बोला इन लोगों ने लेकिन. ओके, टाइम फ्रॉम ओ टू सॉरी फ्रॉम ए टू ओ. ओके, अच्छा यहाँ पे ये इस टाइप का कोलिजन हुआ. ओके ओके, अंडरस्टैंडेबल. ये तो कुछ ही कुछ है यार. सॉर्ट ऑफ जी एच इसे तो कोई भी वेलोसिटी है तो उसे लॉन्च किया वॉट एवर. दिस थिंग इज सी. क्या है ये चीज? ओके, दैट डिस्टेंस है एट लीस्ट अ कांस्टेंट. वो तो भी अच्छी बात है. सो लाइक सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी एच cosine alpha. That's the time required, right? Okay, so time from A to O क्या होगा? अच्छा, O to A अपने को पता है. A to O में क्या होगा? Let's say imperfectly elastic ball. Okay. I mean, I can assume कि normal force act कर रहा है सिर्फ और कुछ force नहीं act कर रहा. But what about friction? क्या वो act नहीं करेगा? I guess it should.
you know. Okay, और ये सेम हाइट से नीचे जाता है, टाइम पीरियड अपने को पता नहीं है, यू नो. सो ए टू ओ जर्नी के लिए मैं लिख रहा हूँ द टाइम पीरियड इज सी अपॉन वी एक्स एंड कितनी हाइट कवर की इसने, जो भी हाइट एच कवर की होगी दैट्स इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका लाइक वर्टिकल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी राइट, या अपने को पता नहीं क्या है. सो यू वाई टी माइनस ओके कैपिटल टी minus g upon 2t square that's just equal to yes like h is just equal to ये चीज uy uyc upon vx ux whatever minus g upon 2 times c square upon ux का square right and god ये कितना घटिया दिख रहा है. how do you even know कि तुम्हें कैसे पता है कि एक्चुअल में क्या वेलोसिटी इसकी रही होगी. फ्रिक्शन हो सकता है इस पे कुछ भी हो सकता है. या हाउ डू यू नो दैट अनलेस ऑफ कोर्स तुम अज्यूम करो कि फ्रिक्शन जीरो है व्हिच इज काइंड ऑफ चीटिंग इजंट इट राइट. फाइन सपोज फ्रिक्शन जीरो है, बढ़िया. इट्स एन इम्परफेक्ट बॉल राइट, अंडरस्टैंडेबल. सो वो जो कंपोनेंट था वो स्टिल वैसा ही रह गया एक्सेप्ट कि ये जो कंपोनेंट, यार अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता देन इट वुड बी लाइक सो मच मोर डूएबल. ठीक है, जस्ट हैव टू डू इट द वे दैट्स जस्ट दिस वेलोसिटी एंड देन इसको पूरा गिरना पड़ेगा. ये पागलपन नहीं है राइट. इस हाइट को तुम h बोल सकते हो, तुम h निकाल ही लो ना. इनफैक्ट लाइक c अपॉन square root of gh and then you got cosine alpha, that's this thing right, that's our time. So ut, oh god ये पागलपन है, minus half like g upon 2 times this thing square, it's like c square upon gh cosine square alpha whatever. Capital H is this thing so square root of gh, oh ये तो cancel होने वाला है. That's at least nice. Oh, by the way, it's just sine alpha right there. So c tan alpha minus ये चीज ये कैंसिल हो जाएगा, जिसमें like c square upon 2h cosine square alpha, right? That's the thing. Okay, at least now we know that much. अब इसमें मैं क्या करूँ आखिर. So ये मुझे वापस h कवर करना है. You gotta figure out कि oh and by the way यहाँ पे launch होना चाहिए. We don't even know what Vx actually is. So okay, let's see upon Vx. तो बस चलते ही जाएगा इस टाइप से, मतलब so time is c upon Vx और h is just equal to ut and square root of gh sine alpha times the time. So c upon vx minus g upon 2 times t square. So with this thing का square c square upon vx का square, right? That's how it's going to be. तो इनको equate कर दो. That's the only thing you can do really. So like c tan alpha minus c square upon 2h cosine square alpha, that's equal to square root of gh sine alpha, okay, c square root of gh and then upon bx or अब मेरे को इस तरह से bx ढूंढना पड़ेगा. That's just a quadratic and what not. I don't think it's even doable. Okay, I guess we should stop now. See you guys in the next video. Bye.